Interesting day's play then here on day 2 of this test match. Things really taking a turn in that last half an hour. Pakistan were bowled out for 366 in their first innings, and England in response are 239 for 6 at the close of play. Fantastic innings by Ben Duckett. They're now trailing by 127 runs. Welcome to Pitside. Well, it started off well for England just in terms of their batting. Ben Duckett playing that fabulous 100, and then in that last half an hour things turned around, but Sajid Khan started to make the ball talk. I've been joined by Amir Suhail and David Kaur. Amir, great signs for Pakistan just towards the end, because it seemed like it was a struggle out there initially for spinners, and suddenly after tea, all things started to happen out there on the field. And that stubborn pitch yielded at the right time for Pakistan. And let me tell you, it's a relief for the curator. It's a relief for the ground staff. It's a relief for the selectors. It's a relief for the Pakistani captain to be here. Absolutely. I think that he summed it up really well, DG, because there was so much conjecture around whether there's going to be a turn, whether there's going to be any assistance for the spinners. And for the most part of it, England did tackle it really well. I mean, we'll come to Ben Duckett's innings, but just overall, I think, how do you think England is going to be feeling at the end of the day's play? Well, I think there were two crucial passages. One is the last couple of wickets for Pakistan put on 50-60 runs. And that could turn out to be crucial. And the other thing is what you've just talked about, the last hour of play, where for the first time, the ball started to turn consistently. Up until then, the odd one had turned and turned quite big. There just seemed to be a few spots where it was dusting, but then once it turns consistently and also quite a long way at the same time, then you're in, then you've got problems again. I thought Sajid Khan did a really good job, because he puts good revolutions on the bottle. You have a little bit of luck with Joe Root and the bottom edge onto the foot and then back onto the stumps, because that's a shot that Joe, as well as Ben Duckett, make a lot of runs with. You sort of see the way it's dragged down onto the back leg and onto the stumps. And that was, to use a pun, the turning point. You said things took a turn in that last hour. Well, yes, turn is the word of the moment. And at the end, you had sort of Duckett chancing his arm once too often. I mean, he played beautifully, absolutely beautifully. And instead of that edge flying wide of slip, it goes straight to slip, sharp chance. And Harry Brook, of course, that's what he does. He'll try and get on the back foot and watch the ball, but that just turns too much this one time. So when it turns like that, even Harry Brook, in the form he's in, with the talent he has a chance of missing it. For Ben Stokes, first innings for a long time, hasn't played cricket out in the middle since August. And this is a sort of actually a good sharp chance taken. So yeah, that turned everything around in the space of 30-40 minutes. Well, you talk about Sajid Khan's bowling, and he's quite spot on with his line today, Amir. Just overall, summarize his bowling for us. I think just before tea, he was desperate. And after tea, when the ball consistently started to respond, and he realized that he has to maintain a good line and length, and wickets will follow. And his persistence actually paid. And now the Pakistan is in a very good position in this test match. Just in terms of then, when England started off, you had somebody like Ben Duckett, who loves, again, playing against Pakistan, DG. He seems to love sweeping Pakistan off their floors, because that's what we've seen from him time and again. Whenever he does come to Pakistan, he loves executing that shot, and he just does it pretty well. I just want to make a comment before David Gar says anything. Since there is so much dust on the pitch, sweeping is the right thing to do. Sweeping is the right thing. Oh, well, thank you for that. Well, that's just obviously, we couldn't have proceeded without that remark. No, he plays a variety of sweep shots, different angles. The ability he has with that shot is to place it, by and large, where the fielders are not. So on the leg side, he can sweep it square, behind square, in front of square. On his offside, when he plays the reverse sweep again, he'll use the spaces there to get his boundaries. And because he has that low centre of gravity, he's able to get low down and keep the bat on top of the ball. So by and large, it's probably his most effective shot under these conditions. I mean, in fact, it certainly is his most effective shot under these conditions. From Pakistan's perspective, Amir, the way things have turned for them, now suddenly they have hope that they could get early wickets tomorrow and get in some kind of a position where they have a lead.
of course, it's still a long way You're to go. absolutely right. Given the endeavours of Pakistani team of late in the second innings, let's assume if they get 170 or 200 runs, if they have a lead of about 70 or 80 in the last innings, that'll be a substantial lead. All right, thank you so much for your thoughts, DG. And Amir, you're going to stay here because we're going to take a short breather. We've got Sajid Khan waiting to be sitting with us here on Pitchside, so stay tuned to listen to his thoughts. Back on Pitchside then, we're just talking about how Pakistan got control back into this game in that last 1 hour, courtesy Sajid Khan with his 4 wickets. Well, it's been a brilliant performance by Sajid Khan. Lots of emotions being shown at display, that aggression and, of course, that epic celebration of his. We will be talking to him about that. What is the reason behind this particular celebration? But what a moment for him today to be coming out and taking those 4 wickets against England. And there he is. He joins us on Pitchside. Sajid, thank you so much हमें join करने के लिए. 4 विकेटें आपने हासिल की, तो पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज वही बात आ रही थी, काफ़ी देर से डिस्कशन चल रही है कि जी 20 विकेटें चाहिए, अगर मैच जीतना है तो 20 विकेटें चाहिए. टी के बाद पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या हुआ, एकदम से थोड़ा सा लग रहा था कि जिस तरह टर्न भी ज़्यादा मिल रही है, आपके मुताबिक टी के बाद क्या हुआ कि 4 विकेटें पाकिस्तान ने एकदम से ली? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. जैसे कि आपको पता है, ये लोग अटैकिंग खेलते हैं, और जब टी से पहले हम बॉलिंग कर रहे थे तो ये हम भी अटैक कर रहे थे, वो भी अटैक कर रहे थे. जो हम दोनों अटैक कर रहे थे तो उसको हमें नुकसान लग रहा था. तो बाहर मीटिंग की कोच के साथ, मैनेजमेंट के साथ. तो फिर जब दूसरी प्लान पे आए कि हमने थोड़ा सा अपने अटैक करना है, लेकिन फील्डिंग लेके अटैक करना है, तो उसके बाद फिर थोड़ी सी लाइन बनी, जगह बनी, उसके बाद विकेट लेना शुरू हो गए. अच्छा, जो आपने बात की कि वो भी अटैक कर रहे थे, हम देख रहे थे कि जिस तरह बेन डकेट ने स्वीप काफ़ी इसका इस्तेमाल किया, बाकी उनके प्लेयर्स भी वैसे हैं. तो आप जो कह रहे हैं कि आपने अपने प्लान्स एडजस्ट किए, ये जो ऑफ स्टम्प के बाहर एक लाइन थी, मतलब यही सोचा हुआ था कि मैं बस अब इधर ही कराऊंगा, इस जगह पे कराऊंगा इन ऑर्डर टू गेट विकेट्स? जी बिल्कुल. अगर देखा जाए दरमियान में, लेफ्ट हैंडर के लिए दरमियान में जो लाइन है उधर कुछ नहीं होता. थोड़े से बाहर पैचेस है और बाहर थोड़ा सा रफ एरिया है, उधर से सब कुछ हो रहा है. एक का दुका बॉल जो दरमियान में गिर रहा है वो भी बिल्कुल 68-67 पे जब बिल्कुल स्लो करे वो टर्न मिल रहा है, लेकिन अगर उस पर एज भी लगे तो स्लिप को कैरी नहीं होता. हमारा प्लान था कि थोड़ा सा बाहर की तरफ आए, अगर उधर से वो अच्छा शॉट खेलने को कर जाए तो कोई इशू नहीं है. बस यही प्लान था, उसमें लाइन जल्दी. साजिद, मैं आपसे क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ज़रा मूंछों का ताव कम करो, डर लग रहा है यार. अच्छा जी. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब लेफ्ट हैंडर को बॉल कर रहे थे, 3 दफ़ा गली में से गेंद गुजरा और गली वहाँ पे नहीं थी. सेकंड इनिंग्स में गली देखेंगे हम लोग? जी बिल्कुल. गली वो शानी भाई से और रिजी भाई और सऊद भाई से यही बात होती, वो बिल्कुल स्लैश टाइप खेल रहे थे. अगर मैं गली ले भी रहा था तो वो उसकी सर के ऊपर से जाता था. फिर हमने ये प्लान किया, जो सिल्ला को हटाया और बिल्कुल गली के थोड़ा सा पीछे हमने ले लिया, तो उसका रिवर्स भी बंद हो गया और उसका जो ये स्लैश मार रहा था उधर भी बंद हो गया. तो फिर वो आगे चीज़ों का सोच रहा था, तो उसमें एंड ऑफ द डे वो आउट हो गया. रूट को आउट करने का कितना मज़ा आया उसको? वो आते ही मैंने बोला कि आपके भाई के खिलाफ भी मैं इंग्लैंड में खेला हूँ, और फिर उसको बोला कि मेरी ड्रीम विकेट आप हो, तो वो हंसने लगा. तो जो ड्रीम विकेट थी वही थी. मैं यही पूछने लगी थी कि सारी विकेट्स में सबसे ज़्यादा आपने ये वाली विकेट एंजॉय की है? जी बिल्कुल. जो रूट की? जी जी जी. ठीक है. और सिर्फ रूट की नहीं, बल्कि आपने उनकी सारी मेन बैट्समैन को आउट किया है. परफॉर्मेंस जब भी किसी की देखते हैं तो आप हमेशा ये देखते हो कि टेल एंडर्स को आउट कर रहे हैं, शुरू में ओपनर्स को कर रहे हैं, बेन डकेट, पोप, रूट, ब्रुक. सो जो एक उनका जो मिडिल ऑर्डर है, पाकिस्तान के पास अब ये एडवांटेज है कि ओवरऑल विकेटें मिल गई हैं मिडिल ऑर्डर की. एंड नाउ वी आर इनटू ऑब्वियसली ब्राइटन कार्स आ गए हैं, जेमी स्मिथ आ गए हैं. तो अभी जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था आफ्टर गेटिंग दोज विकेट्स, आई एम श्योर काफ़ी अपबीट होंगे प्लेयर्स के. एक पहले सिर्फ 2 विकेट्स गिरी हुई थी, एकदम से एक पोजीशन में आ गए हैं वेयर दे फील कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स. जी बिल्कुल. ड्रेसिंग रूम का माहौल पहले भी अच्छा था, अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें ये मिला कि अर्ली ऑन जल्दी विकेटें मिल गई एंड ऑफ द डे, और ये हमें चाहिए था हमारी कॉन्फिडेंस के लिए. जिस तरह पिछले हम सीरीज़ हारे बांग्लादेश से और पिछला मैच जब हम हारे इंग्लैंड से, तो ये हमारे लिए बूस्टअप था और इंशाल्लाह इसको हम कैरी करेंगे कल. पिच का बता दें, कैसी लग रही है पिच? लग रहा है कि बहुत हेल्प कर रही है? आपको लग रहा है कि ये कल और मज़ीद क्रम्बल करेगी? बात यह है कि इसमें जो स्पॉट है, अगर उसमें आप 90 के ऊपर से बॉलिंग करोगे तो उसमें आप
आपको ये कदों का ब्रेक मिलेगा। हाँ, पेस वेरी करोगे तभी कुछ ना कुछ मिलेगा, वो भी बाहर से, अंदर से कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जो 3 विकेट है उसके अंदर से कुछ भी नहीं है, थोड़ा बाहर से सब कुछ है। अगर आप पुश से बॉल कर रहे हो, स्लो कर रहे हो, पेस वेरी कर रहे हो तो बहुत कुछ है इस विकेट में। इंग्लैंड ने चौथी इनिंग्स खेलनी है, आपने बॉलिंग काफ़ी की है। आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम को कितनी लीड लेनी चाहिए और कितने रन्स जोड़ने चाहिए सेकंड इनिंग्स में कि ये टेस्ट मैच जीता जा सके? अगर हम लीड ले लें सोहेल भाई तकरीबन 90 to 100 इस मैच में, इसको कल इंशाल्लाह अर्ली और लंच तक आउट कर लें इनको, और फिर हम 200 भी उसके साथ कर लें, मतलब 90 to 100 लीड और 200 हम इस विकेट पे करें, 300 अगर इस विकेट पे हम करें इंशाल्लाह हम ये मैच जीत जाएंगे। ठीक है, चलें, ठीक है। सेलिब्रेशन आपकी हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जो आपकी पर्टिकुलर सेलिब्रेशन है, इसके पीछे कोई है स्टोरी या नहीं? इसके पीछे की स्टोरी यही है कि जितनी भी क्रिकेट के लिए मैं हर चीज़ से मतलब परफॉर्म के साथ बाहर होता हूँ। मतलब मैंने जितनी भी क्रिकेट के लिए, स्कूल क्रिकेट के लिए, पेशावर से अंडर 13, 16 परफॉर्म के साथ मैं हर जगह बाहर होता था। जब भी मैं क्रिकेट खेलता था, मैं स्टार्ट में एज अ बैट्समैन था, फिर बाद में मैं स्पिनर बना। तो जब भी मैं परफॉर्म करता था तो स्ट्रेट अवे पेशावर की जो जितनी भी मैनेजमेंट और सारी चीज़ें होती थी, मैं उधर ही से सारा क्रिकेट खेला हूँ। सबसे अच्छी परफॉर्म मेरी होती थी और सबसे पहले ही मुझे बाहर करते थे। तो फिर ये एक जज्बा भी होता है और एक वो भी होता है, तो दैट्स व्हाई ये सेलिब्रेशन ही स्टार्ट कर ली। ऑलराइट, चलें, फिर तो वाकई आपकी सेलिब्रेशन बनती है, यू नो, वो जो एक स्टाइल है आपका वो बनती है, बिकॉज और आप जब कम बैक करते हो पिछले सीरीज़ में मैं था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उधर भी मैंने अच्छी बॉलिंग की थी। ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बॉलिंग अच्छी की थी। अगले सीरीज से विदाउट एनी रीज़न बाहर कर दिया, फिर इसी में आ गए। चले, कोई बात नहीं, अब कोई नहीं, होपफुली इस परफॉर्मेंस के बाद एवरीबडी रिकग्नाइजेज आपकी जो अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द बेस्ट। अभी तक मैच जो है चल रहा है। थैंक यू सो मच आमिर फॉर योर थॉट्स एज वेल। एंड देयर यू हैव हर्ड फ्रॉम Sajid Khan. He's very proud of his achievements and he's done particularly well with the ball. Let's have a quick look at what we have for you in store tomorrow. Beautiful shot of the moon there, and the coverage tomorrow starts at 9:25 a.m. Well, we've got plenty of action lined up for you for tomorrow. It's going to be an interesting day's play. Pakistan will be looking to build on that lead. First of all, get those 4 wickets and then build on that lead. And then hopefully we can hope for a result pretty soon. So I hope you guys enjoyed today's proceedings. Until tomorrow, it's goodbye.